Due to the network problem, the first live got stopped. Then, कोई बात नहीं. We will be starting here. We will be starting here with this. So no problem regarding with that. So next is the anodization. In this method, metals like the copper, aluminium are coated with a thin and a strong layer of their oxides by means of electrolysis. For this copper or aluminium article is used as an anode. As this oxide layer is strong and uniform all over the surface, it is useful for the prevention of corrosion of the metal. सो ये जो एनोडाइजेशन ये जो मेथड है सो यहाँ पर जो कि मेटल्स होते हैं कॉपर एल्यूमिनियम को उनको हम कोट करते हैं किससे अ थिन एंड द स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ देयर ऑक्साइड्स और इसके लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं ये मेटल को जो ऑक्साइड की लेयर यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रोलिसिस मेथड हियर सो फॉर दिस कॉपर और द एल्यूमिनियम आर्टिकल इज यूज्ड एज अ एनोड और जो कॉपर और एल्यूमिनियम के जो आर्टिकल्स है वो एज अ एनोड यहाँ पर एक्ट करते हैं एज द ऑक्साइड लेयर इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म ऑल ओवर द सर्फेस इट इज यूजफुल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ corrosion of the metal. Next is, for example, when aluminum is anodized, the thin layer of the aluminum oxide is formed. और जब हम एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज करते हैं सो एनोडाइज करते हैं सो उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द कांटेक्ट ऑफ द एल्यूमिनियम विथ ऑक्सीजन एंड द वाटर और ये ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाने के बाद उसके ऊपर मतलब जो ऑक्सीजन और द वाटर का जो इम्पैक्ट होता है तो उसको वो रोक देती है दिस प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन और इसके हिसाब से इसकी वजह से जो आगे फर्दर जो ऑक्सीडेशन वगैरह होता है एल्यूमिनियम का सो वो रुक जाता है दिस प्रोटेक्शन कैन बी फर्दर इंक्रीज बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर ड्यूरिंग द एनोडाइजेशन और हम ज्यादा थिक लेयर ऑक्साइड की यहाँ पर जो कि कॉपर एल्यूमिनियम के यहाँ पर अप्लाई करके इसे प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम द करोजन सो नेक्स्ट इज यहाँ पर आप डायग्राम में भी यहाँ पर देख सकते हैं दैट इज अ पावर सप्लाई विच वी हैव सप्लाइड एनोडाइजेशन की डायग्राम में एनोड में यहाँ पर एल्यूमिनियम कॉपर के हम यहाँ पर देख सकते हैं एंड द कैथोड इज दैट दिस लाइनिंग नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग So, in this method, a less reactive metal is coated on a more reactive metal by electrolysis. Silver-plated spoons, gold-plated ornaments are the examples of the electroplating. और electroplating एक ऐसी मेथड है जहाँ पर हम जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है उसके ऊपर हम जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है उसकी एक लेयर वापस बाय द यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस सो सिल्वर प्लेटेड जो स्पून्स होते हैं गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स जो होते हैं तो वो सारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग से ही बनाए जाते हैं दैट इज दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द करोजन सो कैथोड एल्यूमिनियम का स्पून है यहाँ पर और एनोड सिल्वर प्लेट है सो सिल्वर की कोटिंग हम यहाँ पर इस एल्यूमिनियम के स्पून पर हम करते हैं टू अवॉइड ऑल दिस करोजन सो नेक्स्ट फिफ्थ इज एलोइंग Majority of the metallic substances used presently are in the form of the alloys. So alloy क्या है कि हमने जो मेटल नॉन मेटल्स मेटालॉइड्स वगैरह हमने देखा है सो alloy is that it is a mixture of the two different metals यानी दो अलग अलग मेटल्स अगर होंगे सो उसका कंबाइन जो मिक्सचर होता है दैट इज द alloy. So the main intention behind this is to decrease the intensity of the corrosion of metals और alloy का यूज करने का जो मेन इंटेंशन है टू अवॉइड द corrosion of these metals. So the homogeneous mixture formed by mixing a metal with the other metal or non-metal in certain proper proportion is called an alloy. So यहाँ पर alloy की definition दी है अगर एग्जाम में पूछी जाए so आप ये लिख सकते हैं that is it is a homogeneous mixture by mixing a metal with other metal or non-metal in certain proportion is called an alloy. For example, bronze is an alloy formed from 90% कॉपर एंड 10% टिन जो ब्रॉन्ज एक एलॉय है सो वो बनता है दैट इज 90% कॉपर और 10% टिन के यूज से जिसमें 90% ब्रॉन्ज होगा ब्रॉन्ज इज एन एलॉय 90% उसमें कॉपर होगा और 10% टिन होगा
सो ब्रॉन्ज स्टैचूज डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय सन एंड रेन, और जो ब्रॉन्ज से बने हुए जो स्टैचूज होते हैं उनके ऊपर सनरेज या रेन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। स्टेनलेस स्टील डज नॉट गेट स्टेन्स विथ एयर और वाटर एंड ऑल्सो डज नॉट रस्ट, और जो स्टेनलेस स्टील होता है वो रस्ट भी नहीं होता और उसके ऊपर एयर नहीं होता। So it is an alloy made from the 74% iron, 18% chromium and 8% carbon. So जो स्टेनलेस स्टील होता है एलॉय, वो 74% आयरन से 18% क्रोमियम और 8% कार्बन से मिलकर वो एलॉय स्टेनलेस स्टील बनता है। इन रिसेंट टाइम वेरियस टाइप्स ऑफ द एलॉयज आर यूज्ड फॉर द मिंटिंग कॉइन्स, यानी जो कॉइन्स होते हैं सो उसमें भी वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एलॉयज आर यूज्ड रिसेंटली। So again, do you know? When one of the metal is in an alloy is mercury, the alloy is called as the amalgam. So जब alloy में एक जो metal होता है, as we have seen, that alloy is the mixture of the combination of the metal or metal non-metal. So in a fixed proportion, as we have seen above the examples regarding with that, कि stainless steel जो होता है, so उसमें 74% iron, 18% chromium and 8% carbon is present. So it is a mixture of the various different metals and the non-metals, so that combine in a proper fixed proportion to form a particular alloy. So when there is the one formation of an alloy, and if the one of the metal is in the alloy is the silver, then it is called as the amalgam. For example, sodium amalgam, zinc amalgam, etc. So silver amalgam was earlier used by the dentist. So silver amalgam जो है वो अर्लियर डेंटिस्ट जो थे वो यूज करते थे, एंड गोल्ड अमलगम इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द गोल्ड, और जो गोल्ड अमलगम होता है सो दैट इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द गोल्ड। सो दिस वाज द चैप्टर दैट इज मेटलर्जी। सो एक बार देख लेते हैं कि व्हाट वी हैव स्टडीड अप टू नाउ इन दिस चैप्टर, a quick revision. As this chapter is lengthy, but it is again interesting one, कि मेटलर्जी में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स में देखी कि अर्थ मतलब 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ वाज बॉर्न। सो जो कि मेटल्स होते हैं वो प्योर फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते, सो दे आर प्रेजेंट इन द कंबाइंड फॉर्म, आइदर इन द फॉर्म ऑफ द ओर्स, देन कंबाइंड विद द फॉर्म ऑफ द सॉल्ट्स, क्लोराइड सॉल्ट्स, ऑक्साइड्स वगैरह के प्रेजेंट में जो मेटल्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, they are not present in the free state. So we have studied about the various physical properties of the metals, then physical properties of the non-metals हमने देखी, chemical properties of the metals देखी, so we have seen about the experiment, then reaction of the metal देखे हमने, reaction of metal with oxygen, with water, then with we have seen about the oxygen, that how the reactivity series is there, magnesium is greater than aluminum, greater than zinc, greater than iron. We have also studied about the various different kinds of the reactions related with the reaction of the metal with the acid. So how they forms the compounds, that is we can see magnesium when reacts with HCl gives MgCl2 plus hydrogen gas is given out. Then we have seen about the reaction of metals with the nitric acid, copper का nitric acid, that is the concentrated nitric acid के साथ what will be formed. Then copper का 8HNO3, that is dilute. Dilute nitric acid के साथ reaction देखी. Then reaction of the metals with the salts of the other metals, वो हमने देखा. Then reactivity series of the metals जैसे कि potassium, sodium, lithium, calcium, highly reactive, magnesium, aluminum, zinc, iron, tin, lead, less reactive, copper, mercury, silver are मोर लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर विद द मैग्नीशियम, और गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव। रिएक्शन ऑफ द मेटल्स विद द नॉन मेटल हमने देखा कि आयोनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहे थे। देन वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स, जिसमें नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, नॉन मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ नॉन मेटल की रिएक्शन, और नॉन मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ। Then we have studied about the ionic compounds, its properties of the ionic compounds, what are the different properties and all. Then we have started with the metallurgy, then occurrence of the metals. We have studied about the various basic principles of metallurgy to obtain the pure form, how the concentration of the ores, उसके अलग अलग मेथड देखे, separation of based on gravitation, विल्फले टेबल मेथड देखी, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, देन फ्रोथ फ्लोटेशन देखी, लीचिंग देखी, एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स जो कि रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन हमने देखा. देन एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम, हाउ द एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइट ओर.
So we have studied about the process, all एक्सट्रैक्शन ऑफ द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स देखे, देन लेस रिएक्टिव मेटल्स का भी हमने एक्सट्रैक्शन देखा, देन व्हाट इज द रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स, एंड लास्टली वी हैव स्टडीड अबाउट द करोजन ऑफ द मेटल्स। उसमें हमने अलग अलग प्रिवेंशन ऑफ करोजन के जो टेक्निक्स है, जो कि गैल्वनाइजिंग हो गया, देन टीनिंग हो गया, एनोडाइजेशन हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, एलोइंग, दिस ऑल वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर मेटलर्जी। So still if you are having any doubt regarding with this chapter or the previous one, then you may ask in the live chat or in the comment. So here we ends with our chapter, that is the metallurgy. In the next part we will be trying to start with our next chapter, that is the carbon compounds, which is again a huge chapter and also one of the important chapter with respect to all the exams. So we'll be starting with the carbon compounds, again one of the major chapter in the chemistry, and also it is important because with the weightage as in the board exam is used for this chapter. So ये भी हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, कार्बन कंपाउंड्स एंड ऑल फ्रॉम द स्क्रैच, and the last part, that is the space missions. So we will be completing that, as this chapter will take the time to complete, as it is huge. Space missions we will be completing, and our class 10 science one whole syllabus will be completed here. So try to solve the in means exercise के questions आप solve कीजिए. That will be simple, as I have explained each and every part of this chapter metallurgy. So you will be not facing any kind of the issue in the solving of this all questions related with the chapter, as MCQs, match the columns and all. Okay, so we will be stopping here. Thank you for joining all. If you have not liked this video, then do like, subscribe to this channel for the more content related with the